Hello everyone, today we are going to start with Chapter 3 Ncert Class 9th Mathematics. Name of this chapter is Coordinate Geometry. As students, this word coordinate might be new for you, but you all are quite familiar with geometry. Geometry is a branch of mathematics in which we are dealing with different type of shapes. 2D shapes, 3D shapes, 1D shapes, and their areas, their volumes, their perimeters, all these things comes under geometry, right? Coordinate geometry is again a very important branch of mathematics which is describing the relationship between geometry and algebra, right? Now, in class 9th, we are having only its introduction part, the basic concepts which comes under this topic coordinate geometry. We are going to learn about the basics only in class 9th, right? How to plot a point, what are the coordinates of a point, what is called that Cartesian plane, why it is called the Cartesian plane, what are called x-axis, y-axis, and how to plot the points, right? Now, let's start with it, how we can do this. Okay, firstly let's discuss about the coordinates. What are called coordinates of a point? Have a look. This is a plain sheet with me and you can see there is a one star on it. Now what you have to do, you have to describe the position of this star to your friend in such a way that he can plot this star on another blank sheet exactly at the same position, exactly at the same point. How you will do this? अब तुम कैसे करोगे, उसको कैसे बताओगे अपने फ्रेंड को कि एक स्टार मैम ने बनाया था इस पेज पे और वो इस जगह पे बनाया था. आपको एक ही चांस मिलेगा उसको डिस्क्राइब करने का, तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे अपने फ्रेंड को कि वो इस स्टार को इस ब्लैंक शीट पे एग्जैक्टली उसी जगह पे प्लॉट कर दे, एग्जैक्टली उसी जगह पे draw kar de. How you will do this? Might be some of you are thinking this star is there in the lower half of this sheet, right? Obviously it is there in the lower half of this sheet. This is the lower half, but where it is? यहाँ पे तो सारा पोर्शन, ये इतना पोर्शन जितना भी है ये सब लोअर हाफ में ही आता है. अब लोअर हाफ में आप अपने फ्रेंड को ऐसे बोलोगे कि वो जो स्टार मैम ने बनाया था दैट वाज देयर इन द लोअर हाफ ऑफ दिस शीट, तो लोअर हाफ में तो वो कहीं पे भी हो सकता है. अब आपको लगता है कि आप उसको इतना आंसर दोगे तो आपका फ्रेंड एग्जैक्टली उसी जगह पे उस स्टार को प्लॉट कर देगा? नो. ओके, अब हो सकता है कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि दिस इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ दिस शीट, in the lower half and near the left edge, might be, है ना? आप सब में से कुछ ने ये भी सोचा होगा कि ये जो स्टार है it is there in the lower half of this sheet and near to the left edge. अब lower half और left edge की अगर हम बात करते हैं, ये इसका हाफ हो गया ना, ये इसका lower half हो गया. अब लेफ्ट एज, बेटा अगर मैं इतने पोर्शन की बात करूँ ना तो ये सभी लेफ्ट एज के नियर ही आता है. अब लेफ्ट एज में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे आपको लगता है कि वो पॉइंट फिर भी एग्जैक्टली स्टार उसी जगह पे बन पाएगा जहाँ पे वो एक्चुअली इस पेज पे है? डू यू थिंक सो? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्टार का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा. अब डिस्टेंस कैसे निकालना पड़ेगा? Might be some of you are thinking like कि हम क्या करेंगे, इस स्टार का डिस्टेंस निकाल लेंगे इसके अपर एज से और इसके लोअर एज से. When we are going to calculating its distance from its upper edge, it is near about, okay, it is near about 15 and this is near about 24. अपर एज से इसका डिस्टेंस कितना है? नियर अबाउट 24. अपर एज से इसका डिस्टेंस है नियर अबाउट 24. Now let's calculate its distance from lower edge. Its distance from lower edge is 6.
distance from lower edge is 6 centimeter and from upper edge it is 24 centimeter. अब हो सकता है कुछ बच्चे अपने फ्रेंड्स को ऐसे भी बताएं कि मैम ने जो स्टार प्लॉट किया था वो अपर एज से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था और लोअर एज से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे था. डू यू थिंक इट इज़ द राइट वे? और अगर आप अपने फ्रेंड को इस तरह से बताओगे तो आपका फ्रेंड एग्जैक्टली उसको उसी पोजीशन पे प्लॉट कर सकता है. अब देखो माइट भी, अब अपने के फ्रेंड ने मान लो स्केल यहाँ पे रख दिया हो, है ना, मान लो यहाँ पे ही रख दिया हो. अब क्योंकि आपने उसको बताया है ना लोअर हाफ में है, तो लोअर हाफ तो ये वाला हो गया, और आपने उसको ये भी बताया कि वो जो है वो लेफ्ट एज के नियर है, तो हो सकता है आपका फ्रेंड यहाँ से प्लॉट करना शुरू कर दे. अब जब वो उसको देखेगा तो 24 के आसपास यहाँ पे पहुँचेगा और नीचे से, तो पॉइंट तो फिर भी बेटा अगर मैं इस स्टार की बात भी करती हूँ ना, तो ये वाला स्टार भी अपर एज से 24 सेंटीमीटर है और लोअर एज से 6 सेंटीमीटर है. तो डू यू थिंक कि इस तरह से वो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता पा रहा है? नो. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में जब आप अपने फ्रेंड को बताओगे, you have to find out the distance of this star or this point from two perpendicular axes, not from two parallel axes. अब आप दो perpendicular axis से इसका distance निकाल के देखो. Its distance from perpendicular axis is, as you will find out, its distance from its left edge, it is 7, and from its lower edge, it is 6. Now, let's plot this point on this another sheet. 7 centimeter away from the left edge, right? This is, and 6 centimeter from the lower edge. Near about this is, and you can see this is the exact position of our star, which is 7 centimeter from the left edge and 6 centimeter from the लोअर एज. नाउ व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग बेटा, अगर मुझे किसी भी पॉइंट की किसी प्लेन में पोजीशन बतानी होती है तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टू परपेंडिकुलर एक्सिस का. टू परपेंडिकुलर एक्सिस से हम उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. जैसे इस पॉइंट का हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया, यू कैन सी दीज टू आर टू परपेंडिकुलर लाइन्स. इससे जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया तो दिस इज 7 यूनिट्स, और जब हमने लोअर एज से फाइंड आउट किया तो दिस इज 6 यूनिट्स, 6 सेंटीमीटर. तो वी कैन गेट इट्स एग्जैक्ट पोजीशन. सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग इन अ प्लेन विद द हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस. Okay students, as we have learned, to find the position of a point in a plane, we required its distance from two perpendicular axes, right? The horizontal one and the vertical one. The horizontal one is called x-axis and the vertical one is called y-axis, right? Now, do you remember in our previous classes we have already learnt about the number line? This is our number line. In the middle we are having 0. On its left side we are having positive numbers. On its right side we are having positive number, and on its left side we are having negative numbers. This is called horizontal number line, right? This is another number line which is called vertical number line. Again, in the middle we are having 0. Above 0 we are having positive numbers, and below 0 we are having negative numbers, right? If we will combine both these two lines in such a way, these two lines are intersecting at point 0. Means मान लो मैंने इस लाइन को यहाँ से उठाया और इस लाइन को यहाँ पे प्लेस कर दिया. किस तरह से प्लेस कर दिया कि ये जो 0 है ये 0 पे क्या होना चाहिए? इंटरसेक्ट होना चाहिए, like this. 0, this should be the intersecting point of both these two lines. 0 should be the intersecting point, as we know that above 0 we are having positive numbers and below 0 we are having negative numbers, right? Now let's discuss about all these things in the detailed manners, what these
lines are called, what this horizontal line is called, what this vertical line is called, what this intersecting point is called, what all these four parts are called. Let's start with it. Okay students, this horizontal line is called x-axis. This is x, this is x dash, right? This is positive x-axis, positive x-axis, this is negative x-axis. This is called positive y-axis, this is called negative y-axis. The intersecting point of both these two lines is called origin. But it is called origin. Now you can see these two perpendicular lines. When we have drawn these two perpendicular lines, they are dividing this plane into four parts, right? 1, 2, 3 and 4. But their order is always specific, right? It is fixed. This is always first, second, third and fourth. We have to take them anti-clockwise. Clock ऐसे चलता है ना? Anti-clockwise लेना है अपने इसको, like this. This is first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. And this each part is called quadrant. What they are called? Quadrant. This is quadrant 1. This is quadrant 2. This is quadrant 3 and this is quadrant 4, right? And the plane which consists both these two axes and these quadrants is called coordinate plane or Cartesian plane, right? It is called coordinate plane or Cartesian plane, right? And these two axes are called coordinate axes, x-axis and y-axis, together called coordinate axes. Is it clear? Students, here you can see this axis is the plural of axes. This is x-axis, y-axis and together they are called coordinate axes, A-X-E-S. And यहाँ पे spellings क्या है? X-axis, X-A-X-I-S. Hope it is clear to you all. This is called our coordinate plane or Cartesian plane. What we are having here, we are having two perpendicular axes. This horizontal one is called x-axis, this vertical one is called y-axis, where these two lines intersecting one another is called origin. This is called positive x-axis, this is called negative x-axis, this is called positive y-axis and this is called negative y-axis. Is it clear to you all? And it divides these two coordinate axes, divide this plane into four parts. And each part is called quadrant, right? This is called quadrant 1, quadrant 2, quadrant 3 and quadrant 4. Total how many quadrants do we have? 4. And we have to take their positions anti-clockwise, right? This is always first, second, third and fourth. Hope it is clear to you all. Okay students, as I told you, this plane is called coordinate plane or Cartesian plane. Now the question is here, why this plane is called Cartesian plane, right? But actually this theory was initially developed by a French philosopher, he is mathematician also, René Descartes, right? And in honor of Descartes, the system, with the help of this system, we can plot any point in a plane with the help of two perpendicular axes.
This system is also known as Cartesian system. Right? And this plane is also known as Cartesian plane. Right? Okay, let's see. Now I am going to draw these coordinate axes on this graph paper with the help of a scale. This is vertical one is called y-axis, and this horizontal one is called x-axis, right? This is called x-axis. This one point, the intersecting point, is called origin. This is positive x-axis 1, 2, 3, 4 and 5. This is negative x-axis -1, -2, -3, -4 and -5. This is positive y-axis 1, 2, 3, 4 and 5. This is negative -1, -1, -2. This is -3. This is -4 and this is -5, right? Now let me take one point here, P. How we can find out the position of this point P in this plane? How we can find out? As I told you at the beginning, how we can find out the position of a point in a plane, we need to find out the perpendicular distance of this point from two perpendicular axes, right? Now how we can do this? Firstly, we have to find out the perpendicular distance of this point P from x-axis, and then we have to find out its distance from y-axis. Let's find out its distance from x-axis. You can see how many units are there. 1, this is 1, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. What it is? 4 units. Right. Now what about this one? This is again, this is 1, this is 1, 2 and 3. What it is? This is 3 units. Its distance from x-axis is 4 units. Its distance from y-axis is 3 units. Now, how to write down its coordinates, beta? Distance from x-axis of any point is called its x coordinate. Its distance from x-axis is called y coordinate, and distance from y-axis is called x coordinate. अब सबसे पहले जब हम किसी पॉइंट को लिखते हैं ना, जैसे हमने किसी पॉइंट को किसी प्लेन में लिखना है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसको हम दो पॉइंट्स की हेल्प से लिखते हैं, दो डिस्टेंस निकालते हैं परपेंडिकुलर. वन इज फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड अनदर वन इज फ्रॉम वाई एक्सिस, राइट? अब ये जो फर्स्ट होता है ना, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज ऑलवेज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट. देयर ऑर्डर इज फिक्स्ड. ये ऑर्डर्ड पेयर होता है, इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है? फिक्स्ड होता है. यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा किसका रहता है? एक्स का, और सेकंड कोऑर्डिनेट हमेशा किसका रहता है? वाई का. अब एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअल में क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x coordinate is distance from y axis and y coordinate is distance from x axis. ये चीज ना इसमें हमेशा ही फिक्स्ड रहती है. आप अपनी मर्जी से यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. कोऑर्डिनेट्स हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं. इसको ऑर्डर्ड पेयर इसीलिए बोलते हैं कि जिसका ऑर्डर होता है ना, वो हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है. ऑलवेज द फर्स्ट वन इज x कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड वन इज ऑलवेज अ y कोऑर्डिनेट, राइट? This is x coordinate, what it is called? Distance from y axis, and y coordinate is distance from x axis. अब इसको लिखोगे कैसे? जैसे ये मैंने P पॉइंट प्लॉट किया है ना,
अब अगर आप इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालते हो तो ये कितने यूनिट्स पे था, 4 यूनिट्स पे। तो ये किससे डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 4। और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस यहाँ पे कितना था, 1, 2 एंड 3 यूनिट्स। तो ये कितना हो गया, 3। इज इट क्लियर। तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, 3,4। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया आपके पास, लेट इट बी है, दिस इज पॉइंट क्यू। अब मैंने आपको बोला कि आपने इस क्यू पॉइंट की पोजीशन बतानी है इस प्लेन में। यू हैव टू फाइंड आउट इट्स कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मींस यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट क्यू फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर एक्सिस, राइट। अब मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें हमारे ऑर्डर क्या रहता है, हमेशा फिक्स्ड रहता है। दे आर ऑलवेज इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। द फर्स्ट इज ऑलवेज एक्स कोऑर्डिनेट एंड द सेकेंड वन इज ऑलवेज वाई कोऑर्डिनेट, राइट। X coordinate is called distance from perpendicular distance from y axis and this is perpendicular distance from x axis. तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका x coordinate क्या है। perpendicular distance from y axis, ये हमारी y axis है। इस पॉइंट का perpendicular distance निकालना है y axis पे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको पहले ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए कितना है ये, 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट्स। कितना है ये, 4 यूनिट्स, राइट। और अगर हम इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो ये कितना है हमारे पास, दिस इज 5 यूनिट्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5 यूनिट्स, राइट। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखोगे, मैंने आपको पहले ही बताया इसका ऑर्डर हमेशा क्या होता है, इट्स ऑर्डर इज ऑलवेज फिक्स्ड। फर्स्ट वन इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड सेकेंड वन इज वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। Perpendicular distance from y-axis is 4 units. So this is -4 because this is the negative direction of minus x, na? So that's why we are taking here -4. And what about its y coordinate? This is -5. बेटा जब हम डिस्टेंस लिखते हैं तो हम इसको हमेशा पॉजिटिव में लिखेंगे, पर जब हम कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, एज वी नो दैट दिस पॉइंट इज लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, इट इज इन third quadrant. This is our first, this is second and this is our third quadrant. In third quadrant, x axis is negative, this is negative direction of x axis and this is negative direction of y axis. So conventional sign of any point which is lying in third coordinate is minus and minus. The conventional sign of any point which is lying in first quadrant are positive and positive. Let me explain it again little more. As I told you that this is called Cartesian plane or it is called coordinate plane. This is x dash, this is y dash. This is positive side of x axis, this is negative side of x axis. This is positive side of x axis, this is negative. This is positive side of y axis and this is negative side of y axis. Now what about the signs of any point which comes in this first quadrant? As you can see, this is positive x axis and positive y axis. इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा ना बेटा, उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, पॉजिटिव। नाउ यू कैन सी दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, फर्स्ट हमेशा क्या होता है एक्स और सेकंड हमेशा क्या होता है वाई। अब यहाँ पे एक्स की डायरेक्शन कौन सी चल रही है, नेगेटिव, और वाई की डायरेक्शन कौन सी चल रही है, पॉजिटिव। This is minus comma plus, negative positive. Now in this one we are having x negative, y negative, so minus comma minus. In this one we are having x positive and y negative, x positive and y negative, right? First is always x and second is always y. Their order is fixed, right?